Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 3 Part 2. We continue from moment arm as we discuss earlier line of action of a force, the line on which a force is applied to rotate a body. Moment arm students, the perpendicular distance between the axis of rotation and line of action of the force is called the moment arm of the force, as we discuss in this diagram that this is axis of rotation, a fixed line around which a body rotates. This is the line of action of a force, the point or line along which a force is applied to rotate the body, and this perpendicular distance, students, this distance is called the moment arm of the body. It is represented by length L in figure 4.2. The torque or moment of a force depends upon the force F and moment arm L of the force. Here we discuss that torque two चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो आपके पास फोर्स हो जाएगी, जितनी आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना आप ज़्यादा टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं. दूसरी चीज़ जो हमारे पास टॉर्क को इफेक्ट करती है वो मूवमेंट आर्म ऑफ द बॉडी है. जैसा कि हमने इन पे डायग्राम्स में डिस्कस किया था कि जिस स्पैनर का मूवमेंट आर्म ज़्यादा है उस पर हम कम फोर्स लगा सकते हैं और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि जिस स्पैनर का मूवमेंट आर्म कम है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा. greater is the force, greater is the moment of the force. Similarly, longer is the moment arm, greater is the moment of the force. जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा. जितनी ज़्यादा मोमेंट आर्म की लेंथ होगी तब भी उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं हम. दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क टॉ इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड इट्स मोमेंट आर्म एल. मैथमेटिकली टॉर्क का ये फार्मूला होता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल. दिस सिंबल इज नॉन एज टॉ. टॉ इज इक्वल्स टू force multiplied by its moment arm. Now SI unit of torque is Newton meter, because here force is measured in Newton and length in meters. That's why the unit of torque is Newton meter. And a torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 meter long. Now we discuss example 4.3. A mechanic tightens the nut of a bicycle using a 15 centimeter long spanner. This is the moment arm of the spanner by exerting a force of 200 Newton. Find the torque. Torque as given is force and length is 15 centimeter. Now we convert this centimeters into meter by dividing it with 100, which is equals to 0.15 meters. Now we apply formula. Tau is equals to F cross L. F is 200, which is force. Length is 0.15, which is moment arm, and 30 Newton meter is the answer. Principle of movements. A force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut. Students, जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हम जिस टाइम किसी भी स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हैं, एज यू सी इन द फिगर ए, तो वो हमारे पास यूजली किसी भी नट को टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है. द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट. जिस टाइम हम किसी भी स्पैनर को किसी चीज़ को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड, टू लूजन अ नट द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 4.13b. इस फिगर में 4.13b में आप देख सकते हैं कि स्पैनर से ये पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस टाइम हम इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then this is called anti-clockwise movement. A body initially at rest does not rotate if sum of all the clockwise movements acting on it is balanced by the sum of all the anti-clockwise movements acting on it. This says that a body remains at rest and equilibrium when the clockwise movements and anti-clockwise movements are equal. They cancel the effect of each other and the body remains at rest. This is known as the principle of movements. According to the principle of movements, a body is balanced if the sum of clockwise movement acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on the body. Means कि जब आपके पास कोई भी बॉडी उस टाइम तक रोटेट नहीं कर सकती जिस टाइम तक उसके पास आपका सम clockwise movements का और anti-clockwise movements का equal are. And now we discuss quick quiz. Can a small child play with a fat child on the seesaw? You see this diagram. In this diagram, this is the weight of large child and this is the small child. When we increases the movement arm of small child and decreases the movement arm of larger weight child, then they can balance on a seesaw by increasing the movement arm of small child and decreasing the movement arm of large weight child.
Second, two children are sitting on the seesaw side that they cannot swing. What is the net torque in this situation? Here, it discuss this diagram. In this diagram, you see that there is no rotational effect is produced. So, the sum of torques acting on this body is equals to 0 because the anti-clockwise moments and clockwise moments are equal and opposite. That's why the seesaw cannot be swing. This is the mini exercise. A force of 150 Newton can loosen a nut when applied at the end of a spanner 10 centimeter long. We convert this 10 centimeter to meters, which is 0.1 meters. And to find the torque is equals to F cross L. This is F, this is L, and you can easily find out torque. What would be length of the spanner? Now you find the length and you given the force. The torque which we find here is used in this example. Force is given, torque is 15 Newton from find here, and you can easily find the length of the spanner with this formula. Force is divided by torque and length can easily be found. How much force would be sufficient to loosen it with a 6 centimeter? Again, convert this centimeters into meters, which is 0.06 meters. This is the length. Torque is again used from this answer, and we find the force. Now divide the length with torque and you can easily find the force. The end. If you have any questions regarding the topic, ask it on the WhatsApp groups. Thank you very much, students.